सो आपको दिखा दिया मैंने कैनरी वाफ, आइकॉनिक प्लेस। फिर भी अभी एक लास्ट ब्लॉग में आपको बनाता हूँ कैनरी वाफ के ऊपर। तो जितना भी फाइनेंशियल डील होती है, सारी बड़ी बड़ी डील यहीं पे होती है कैनरी वाफ में, क्योंकि दिस इज़ हेड क्वार्टर्स ऑफ बैंक्स। सो लॉट्स ऑफ बैंक्स कैन डील टू ईच अदर बैंक, बिकॉज एवरी बैंक हैव ए हियर इज हेड क्वार्टर लाइक कैनरी सिटी बैंक एंड बार्कलेस एंड रेवल्यूट HSBC। सो कोई भी फाइनेंशियल डील होनी होगी, चेक बाउंस होगा, चेक पास होगा, एवरीथिंग ऑफ द बिग स्टॉक एक्सचेंज, रिसिप्ट, bonds, checks, they can calculate and manipulate the here only, because this is a headquarter and biggest deal of the big huge figure of the volume of money flow, cash flow. So all the deals are be held on the this place only on. So अब ये वुड वार्फ है और ये छोटा सा लेक है, थोड़ा सा लेक भी बोल सकते हो, और मैं भी थोड़ा सा सस्पेंसस हो गया यहाँ पे, जिसे लेक बोलूँ या रिवर बोलूँ। तो इट्स लुक लाइक लेक, अच्छा है। सो ये अनदर पार्ट ऑफ वुड वार्फ इनसाइड द कैनरी वार्फ, सबसेट ऑफ कैनरी वार्फ। तो ऐसा है यहाँ पे चहल पहल। आपको बैक साइड दिखाता हूँ मैं कैसा है। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सब लेक है, स्मॉल बट इट्स क्यूट। नाइस। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही DLR ट्रेन है जो वेरी फेमस ट्रेन है इस प्लेस की, कैनरी वार्फ की, क्योंकि इसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स काफ़ी बने हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और राउंड ट्रिप दिखाता हूँ साइड के कैसे हैं, फिर यहाँ पे बाद में आएंगे। तो अभी पार्क के दूसरे साइड से जाते हैं। सो मेरे सामने देख सकते हैं आप कैनरी वार्फ स्टेशन है, इज़ अ नाइस। सो दिस इज़ अ प्लेस यू कैन कम इनसाइड द कैनरी वार्फ। So lots of people enjoy and spending the time in the Canary Wharf.
तो अभी मैं वुड वार्क की तरफ वापस जा रहा हूँ, तो दूसरा साइड आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कैसा है वुड वार्क में. सो आई विल गो and definitely go to that place to explore the near round city and city side of the building inside the wood wharf. So it's a night time, but actually it's a 4 p.m. But in Britain it's look like a night in a 4 p.m. So it's the weather of the UK. तो ये वही वाला साइड है in between the wooden wharf and Canary Wharf, the small park. So it's very quiet and very silent. और ब्रिटेन की बात ये है कि पैसे बहुत हैं इनके पास. They have lots of money, cash flow, and they make the rule according to yours. आपके हिसाब से वो आपके लिए लिमिटेड रूल बनाएंगे, पर अपने हिसाब से वो अनलिमिटेड रूल बनाएंगे. ये बात मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, और काफ़ी ये चीज़ें मैंने समझी. हर चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं. टैक्स पेयर अच्छा नहीं है यहाँ पे, एंड लॉट्स ऑफ टैक्स रिजीम, and they just give you only limited tax assumption. But if you have a British citizen, then only you can get and claim that assumption and deductions. But foreigners have no option to escape out from the tax. This is a harsh reality and reality of the Britain. And they make a rule for a student for 20 hours per week, and maximum student can get only £1,000 per month, and after they cross the 1,050, then they liable on the tax. So it's very difficult to surviving for a student because the threshold band is very minimum, and wages, they will definitely increase the wages for as per the requirement of audience of the living who's living in the Britain. But they not like give the relaxation on taxes, because they know if you earn well, you hard work, but definitely they deduct the tax from you. So this is the rules of British. So if you want to explore more taxation, you can go through the financial videos in the YouTube and understand the tax regimes for a British Empire. So ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. If you want to save the tax, you can go definitely Dubai and rest of the USA company. And European have a same situation like Britain. So if you earn more, then you are subject to liable for a tax. So I don't like the system of Britain according to the income or the salary and job perspectives. It's not good. So if you want to quit, you can easily go to Dubai, and USA is definitely you can save your money so much. But here is the taxation system is a fucking. So this is the things I want to say you. So बाकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, रहने का काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है. यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ लंडन इन माई यूट्यूब ब्लॉग्स. सो इट्स नाइस प्लेस एंड वेदर इज़ नाइस. कोल्ड तो है बट इट्स सर्वाइविंग easily, no much harder than like northern polar country like Sweden, Norway and Ireland. Is quite good. It's not more much cooly weather. It's okay, fine, okay to okay. So अभी मैं चल रहा हूँ पीछे, आपको दिखाता हूँ दूसरे साइड से बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड fintech companies and corporate office of the financial buildings. बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि ब्रिटिश हैव अ पावर बाय द मनी. द पावर फ्लो करेंसी इज़ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, but as other side rather than USA have a power from money as well, and equipments of militaries and technologies. So I feel like this once I come here. बाकी
ब्रिटिश पाउंड का वैल्यू तो है पर ब्रिटिश पाउंड है नहीं मीन्स बहुत कम salary threshold, minimum wages, and if you cross the £1,000 you can subject to liable tax. You can't able to save lots of money as compared to USA, because USA you can annually earn around 50 to 60,000 as a unskilled. If you have a skilled like software engineer or doctor or medicine, you can go through the 1 lakh per annum, so it's automatically cross 1 crore per annum. So यहाँ पे इतना है नहीं सैलरी का. यू कैन मैक्सिमम हार्ड वर्क, यू फक योर सेल्फ, यू कैन अर्न 60 to 70 lakh per annum, not more much. 50 to 60, in between 50 to 60 lakh per month you can earn only. So ये सिस्टम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा. If you work hard in foreign land you can expect at least 50 plus, at least, if you work hard. But sometime due to the subject of tax and this fucking rule by the British is you cross £1,000, £3,000, £4,000 bracket, you are difficult to earn 50,000 per annum. 50,000 lakh. 50,000 means 60 lakh. You can maximum without taxation you can. With taxation you can earn around 40,000 to 45,000. Is approximately 50 lakh INR. But if you're living here by sacrifice your family, you can expect at least 60-65 plus, big money. But if you work in USA instead of London, you can save around 30 lakh per annum as a difference. More much safer in USA. If you earn hard work, same as hard work, you can earn more 30 lakh per annum in USA as compared to Britain. So here is the tax system is so huge. If you earn, they have two tax bracket, NI, national insurance, and income tax, payee tax. So there are two tax they deduct from your salary, so it's surviving difficult. And if you cross the threshold and you feel your tax is not liable to subject to the calculation, you can claim the refund and you get the refund after the April financial year, new financial year, same as like India. But still you need to wait till March for getting that money. So ऐसा है यहाँ पे. बाकी कंट्री बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंट्री है, नीट एंड क्लीन है. थोड़ा एक्सपेंसिव बहुत है यहाँ पे. If you earn the milk, you easily burn your £2. If you go the bread, £1 easily. Everything is expensive. If you want to take a water bottle, £1. So it's very expensive. But if you earn more, then they earn that money by your tax, because British government rules are set for our benefit, not public benefit. So that is the problem for UK. Money is, the value of money is good, but getting that money is very difficult. If you earn money, then they get the tax, so you have no any option to skip out from there. So that is my video, is a fintech land and fintech Iceland. मैं ये कहना चाहूँगा इसको, because this is a covering from the Thames River. So is a small Iceland Canary Wharf, called as a land of financial hub and land of financial institution like Citibanks and JP Morgan, like big IT companies here. EY company also be here. So is a land of corporate and financial hub. So this is the money land of Britain. So take care, bye bye, have a nice day, and watch the video for next Christmas crowd in Regenta Street, Piccadilly Circus and Oxford Street. So बने रहना आप मेरे चैनल के साथ. माइल्स ऑन स्टेप, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना मेरे यूट्यूब चैनल. सो अपकमिंग